So we all know what is ordinary differential equation when we are taking derivative with respect to only and only one independent variable, that is ordinary differential equation. Now, when you talk about ordinary differential equation, our main target is always to find the solution to it. Okay, मतलब यहाँ पे basically दो चीजें करते हैं हम. एक तो कोई given situation में हम differential equation बनाते हैं और दूसरा main important thing है अगर differential equation हमारे पास है तो उसको solve करते हैं हम. ठीक है. तो जनरली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है ये हमारे पास तब एग्जिस्टेंस में आया जब फिजिसिस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, या बाकी कोई भी ब्रांचेस ले लो, केमिस्ट्री या कोई भी और ब्रांच ऑफ साइंस ले लो, इनके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, दे यूज्ड टू गिव इट टू मैथमेटिशियंस टू सॉल्व देम. ओके, सो that is how the differential equations concept has kept developing. Now, your ordinary differential equation, mainly we would divide them into, like, linear and non-linear. So when we spoke about linear, we say that the differential equations are linear if the degree of each term is 1 and there is no product between any derivative and the dependent variable. Sorry, and the independent variable. Sorry, dependent variable. So if both of these conditions are satisfied, we will call such a differential equation as linear differential equation. Again, the linear differential equations will be bifurcated into two parts. The first one, or rather, okay, we'll differentiate them into two parts. The first is first order, first degree. So I might not write the word first degree there because linear itself means first degree. So the first one is first order and the second one is higher order. The second one is higher order. Okay. Now when we talk about first order, first degree, you have different methods of solving. The first being variable separable. You've studied these in graduation, okay? Variable separable. Then is homogeneous. Then we had exact. Then we had linear. Also, we had some special case which is non-linear, but then can be converted. Non-homogeneous also to be converted to homogeneous. Okay, सबके subtypes है obviously, but I'm taking only the main ones here. Bernoulli's. Okay, ये सारे आपके first order, first degree के methods हो गए यहाँ पे. Fine. Now, the next here is higher order. Higher order is again divided into two categories. Category number 1 would be with constant coefficients. And category number 2 would be with variable coefficients. Now, in constant coefficients thing, we had two different kinds of solving. First was we found the complementary function. And second, we found the particular integral. Okay. Now, the variable coefficient thing is, okay, someone wants to join in. That's a problem here. Okay.
Now the questions are variable coefficient are the ones which are kind of difficult to crack, because constant coefficient has this method of getting the auxiliary equation. Then you find the complementary function from the homogeneous differential equation, and you find the particular integral either using any shortcut method, or you find the particular integral by the generalized method. Okay, so generalized method exists for all the questions, and the shortcut methods are for particular kind of questions. So I hope things are clear so far, means all of these things are already known to you. Yes or no? Do you know all of these things? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता है. ओके, फाइन. तो अब हम मूव कर रहे हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की तरफ. ठीक है, इसमें हमने ये स्पेशल अटेंशन दिया था सेकंड ऑर्डर वाले को, जो हमारे यूनिट नंबर 2 था. फाइन, वहां पे हमने सेकंड ऑर्डर के जो इक्वेशंस थे उनको थोड़ा सा स्पेशल प्रेफरेंस दिया था. उसके बाद हम अभी मूव कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी. पॉसिबल कि एकदम अचानक से याद नहीं रहता है या भूल जाता है. ओके, सेकेंड ऑर्डर की जब बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल प्रेफरेंस दिया था सेकेंड ऑर्डर को इन यूनिट नंबर 2. We had seen the variation of parameter method. ठीक है. Now your syllabus also has the reduction of order method. The reduction of order method. Now what is this reduction of order method and how do we apply it? Okay, and कब apply करना है, पहले वो समझना है. So what is the difference between variation of parameter method and what is the difference, like what happens in reduction of order method? Variation of parameter method में आपके पास दो solutions already exist करेंगे second order के. Okay, variation of parameter का formula if I write it down. So if you, that's again for second order. So if I have I double dash plus P times Y dash plus Q times Y equal to 0, या फिर इसको equal to RX ले लेते हैं. ठीक है. So and let U and V be two linearly independent solutions of equation number 1. Then the general solution here, okay, it's not linearly independent solutions of 1, it's linearly independent solutions of Y double dash equal to 0. So it's basically linearly independent solutions of the homogeneous equation. Okay? So the general solution of equation number 1 will be Y equal to C1 times U, C2 times V, plus, now we find the variation of parameters here, and that's going to be dependent on the bronze scale. Okay, so it's going to be negative of integration of PR upon W, where W is the Wronskian of U and V, plus integral of UR upon W dx. Okay, this was a variation of parameters method. Before going to reduction of order method, let's understand that ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है उसमें मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होना कंपलसरी है. आई शुड हैव linearly independent solutions of the homogeneous equation. If I can somehow find those answers, only then I can apply variation of parameters method. Otherwise variation of parameters method apply करना possible नहीं हो पाता. ठीक है. तो and yeah, this is going to be, okay, one mistake here, this is going to be U times and this is going to be V times. Okay, fine. So
This is variation of parameters method. Now we're going to start today with the reduction of order method. So the difference क्या है दोनों में? रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड में आपके पास स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा. ओके, आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास u एंड v दो अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगे. ओके, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा. अगेन उसको ढूंढने के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, वो देखते हैं पहले, एंड देन रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड आपके लिए कैसे हेल्प करेगा या कैसे काम करेगा वो देखेंगे. सो पहले तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो हमको चाहिए रिडक्शन ऑफ मेथड अप्लाई करने के लिए, आपको स्टार्टिंग पॉइंट सी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड अप्लाई करने के लिए आपके पास दो स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए. दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मतलब u एंड v एग्जिस्ट करने चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन के लिए. देन यू कैन फाइंड the general solution for the non-homogeneous equation. Okay. Coming to reduction of order method, you will require only one solution of the second order differential equation, of course. But this time, the second order differential equation will not have constant coefficients, it will have variable coefficients. So now we are moving with variable coefficient solutions, okay, over here. So in that case, in case I don't find two solutions, I can find one solution and then I can apply reduction of order method. So let's understand the concept here. So we're now starting with reduction of order method. Before I start with this method, as I said, पहले एक solution हमारे हाथ में होना चाहिए, and वो एक solution मिलने के बाद हम reduction of order method लगाएंगे and उससे दूसरा solution मिल जाएगा हमें. ठीक है? So ये एक solution कैसे निकालेंगे and start कहाँ से करना? Let's understand. So we will start with second order differential equation with variable coefficients. So y double dash अब p of x y dash आएगा and q of x times y equal to 0. Let me call this as equation number 1. Okay. Our search is, because this is a second order differential equation, our search is to find two linearly independent solutions. Second order के दो linearly independent होंगे, first order का एक ही होगा, third order के तीन होंगे, and accordingly nth order के n linearly independent solutions होते हैं. ठीक है? So इसका पहले तो एक ढूंढना है और फिर reduction of order method apply करके दूसरा ढूंढना है. So what are we trying to do over here is we are trying to find one solution of equation 1. We're trying to find, or we are trying to use investigation method to find one of the solution of equation number 1. So there are particular conditions under which they exist. Let's understand this. Okay. Suppose e raised to mx. Okay, because we have seen that आपके जो जनरल सॉल्यूशंस है वो दो या तीन टाइप्स के ही होते हैं, लाइक e raised to alpha x के फॉर्म में या फिर cos साइन के फॉर्म में होंगे, वेयर योर ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर x raised to m के फॉर्म में होंगे. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस. cos एंड sin इसमें कवर हो जाता है e raised to mx में. वी विल फर्स्ट चेक फॉर e raised to mx व्हाट आर द कंडीशंस, then we'll move towards x raised to m what are the conditions, and yes, then we'll work it out. Okay, suppose e raised to mx is a solution of equation number 1. So it has to satisfy the equation. So let me say y is equal to e raised to mx. Therefore, y dash would be m e raised to mx, and y double dash would be m square e raised to mx. Let me put these values in equation number 1, and it will obviously satisfy it. So m square e raised to mx plus m e raised to mx into p of x plus e raised to mx into q of x. This entire thing would be 0. This entire thing would be 0. Okay, fine. Now, since e raised to mx is never 0, right? Exponential term हमें कभी भी 0 नहीं होता है. Positive powers ले लो, negative powers ले लो. This will never be 0. So I'll divide throughout by e raised to mx. तो मुझे मिलेगा m square plus mpx plus
q of x equal to 0. Okay, let me call this as say equation number 2. अब यहाँ पे हम m की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे बिकॉज हमको एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए. वी डोंट वांट e raised to mx which is a general solution. We want a particular solution. Okay, so यहाँ पे when I put m is equal to 1, then e raised to mx से start किया था, so this will imply e raised to x is a solution of equation number 1 if equation 2 में m की जगह 1 डालेंगे तो 1 plus px plus qx is equal to 0. सो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस वाला, देन वी विल डायरेक्टली क्लेम कि e raised to x उसका एक सोल्यूशन है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज अ वंडरफुल रिजल्ट बिकॉज मुझे क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि एक सोल्यूशन क्या है, मुझे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो लेट्स पिक अप एन एग्जांपल. लेट्स टेक y double dash minus say 3 times y dash plus 2y equal to 0. मैंने of course constant coefficient वाला लिया है. You can take variable coefficient. We'll take one more variable coefficient वाला भी लेंगे. ठीक है. So if I take this, यहाँ पे p की वैल्यू -3 है, q की वैल्यू 2 है, and let's check 1 plus p plus q. Okay. तो 1 plus p plus q को अगर देखोगे तो it will become 0. You can cross check, and if this is 0, we can claim that e raised to x is a solution. E raised to x is a solution. Now, why did I take a question of constant coefficient जब हम variable coefficient की बात कर रहे हैं? तो let's understand. यहाँ पे auxiliary equation लेके देखते हैं. This will be the auxiliary equation and इसके जब roots निकालोगे तो what will you get the roots as? Yes, please. What will be your roots? हेलो. Yes. यस मैम, एक बार रिपीट करोगे एक बार फिर से ये? फॉर एग्जांपल y डबल डैश माइनस 3y डैश. हाँ. आपको ये कंडीशन समझ में आया कि e raised to x कब सोल्यूशन बनेगा? यस मैम, ये कंडीशन समझा, बट ये जो आपने एग्जांपल लिया ना, तो हाँ. दोबारा से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डाउट है कि मेरे को समझ में नहीं. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम वेरीफाई कर रहे हैं जो हाँ. हमने सोल्यूशन निकाला है, हमने जो रिजल्ट निकाला है वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. और इसलिए जानबूझ के मैंने कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला लिया है बिकॉज कांस्टेंट कोएफिशिएंट के सम्स करने हमको आते हैं. करेक्ट ना? ओके ओके. कांस्ट हाँ. तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि 1 प्लस पी प्लस क्यू जो है उसकी वैल्यू 0 हो रही है. यस. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट विच वी हैव राइट नाउ प्रूव्ड, वी कैन क्लेम दैट e raised to x इसका सोल्यूशन होना चाहिए. करेक्ट. तो अब हम उसको वेरीफाई यस. करेंगे हमारे नॉर्मल मेथड से. तो नॉर्मल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, राइट? यस. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यहाँ पे क्या होंगे? सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या आएंगे? सॉरी मैम, पता नहीं है. चलो कोई और आंसर करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स? m minus 1. 2 and 1. करेक्ट. 2 and 1 ना. 1 सिंपल and सा 1. इक्वेशन है. 2. सिंपल सा इक्वेशन लिया मैंने. ओके. सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स 1 and 2 है. तो अगर रूट्स 1 and 2 होंगे तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा? चलो सोल्यूशन क्या होगा? e raised to x and e raised to 2x. करेक्ट. तो सोल्यूशन होगा e raised to 2x because of that 2 and e raised to x. तो क्या e raised to x वन ऑफ द सॉल्यूशंस है इसका? Yes, ma'am. Yes. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव क्लेम्ड, राइट? हमने अभी अभी यही क्लेम किया था कि e raised to x इसका सोल्यूशन तब होगा जब 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा. 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो रहा है, e raised to x इसका सोल्यूशन है. हमने डायरेक्टली भी चेक कर लिया और हमने जो थ्योरी डेवलप की है उससे भी चेक कर लिया. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला जो मेथड है ना उसमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. ये जो हम कर रहे हैं ना रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड, इसकी वहां पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है.
इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है जब हमारे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट आते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। ओके, तो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, इसको एग्जांपल नंबर 1 दे देंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 हो। तो अगर मैंने पी ये सेट कर लिया है, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव एक्स प्लस 2 होगी, राइट? सी आई एम डिजाइनिंग दिस थिंग, व्हाट डू यू से, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है, आई नो पी ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 1 एंड क्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे कैन बी क्लेम 1 प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स 0। हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, तो हमने जो थ्योरी अभी भी बनाई है उससे हमें पता चल रहा है कि ई ऑफ एक्स विल बी अ सोल्यूशन। Yes, ma'am. ओके, अब ये देखो, ये वाला जो इक्वेशन था ना, इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन, वेरिएबल कोएफिशिएंट के इक्वेशंस के लिए कोई जनरल मेथड नहीं है, ये समझ लो पहली बात। ओके, जैसे हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए जनरल मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जनरल मेथड्स है इतने सारे, होमोजेनियस वाला ले लो, लीनियर वाला ले लो, या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ले लो, एग्जैक्ट फॉर्म ले लो, बर्नौलीज ले लो। ये आपके पास मेथड्स है, बट ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं, ओके, लाइक, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इतनी दिक्कत नहीं आती बिकॉज इतने सारे मेथड्स है। फर्स्ट ऑर्डर में भले कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो या वेरिएबल। प्रॉब्लम आती है सेकेंड ऑर्डर में, जब वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, इवन नॉट ओनली सेकेंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर में भी जब आपको वेरिएबल कोएफिशिएंट्स आते हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का ऑप्शन है। आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार। ठीक है, Yes, तो ma'am. वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच वी नाउ हैव ओपन टू अस इज, अगर मेरे पास वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, ओके, इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि y डबल डैश की जो कोएफिशिएंट होगी वो 1 होगी। ठीक है, and if it satisfies 1 plus px plus qx equal to 0, I will claim that e raised to x is a solution। हम यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड सीख रहे हैं, हम एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, नेक्स्ट, नाउ what if e raised to x was not a solution? So let me put, okay, let me put m is equal to 2 again in equation 2. We are continuing with that derivation, okay? We are continuing with the derivation. I gave you an example for e raised to x. Now we are going to put for we are going to put m is equal to 2. Now when I put m is equal to 2, we are trying to claim e raised to 2x because e raised to mx से हमने start किया था, right? So e raised to 2x is a solution if, what will be the condition? Equation 2 में m की जगह पे 2 डालोगे तो, इक्वेशन 2 में m की जगह पे 2 डालोगे क्या मिलेगा आपको? कम ऑन, E raised to 2x. नहीं, वो तो e raised to 2x तो आपको सोल्यूशन में मिला, इक्वेशन 2 में डालो बेटा, इक्वेशन 2 में डालो। 4 यस, plus 4 2p plus of x plus 2px q of plus x. q. यस, 4 plus 2 p of x plus q of x should be equal to 0। तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन Yes, ma'am. सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन मिल गया मुझे, if I find a second order differential equation which satisfies this condition, then I will claim that e raised to 2x is a solution। अब जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया है ना, एग्जाम्पल नंबर 1, now that was chosen for a particular reason, उसमें देखो e raised to 1x और e raised to 2x दोनों solutions है, yes or no? Yes, ma'am. Yes. तो वो वाला इक्वेशन जो है, is it satisfying this condition also चेक करते हैं। okay, so for example number 1, let me do it from the left hand side। चलो, for example number 1, p is again -3 and q is 2,
4 प्लस 2 टाइम्स p ऑफ x प्लस q ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 2, करेक्ट? तो ये हो जाएगी 6 माइनस 6 विच इज 0, विच इज व्हाट वी वांटेड, राइट? इक्वल टू 0 अगर हो गया तो दिस विल इम्प्लाई e raised to 2x इज द सोल्यूशन जो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रॉस चेक किया है. ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रॉस चेक किया है. तो इसी तरह से आप ऑब्वियसली m की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो आपको e raised to 3x, e raised to 4x हर एक के लिए कंडीशन मिल जाएंगी. तो e raised to x वाला जो ऑप्शन है, आई होप दैट इज क्लियर. ये स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड वन सोल्यूशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है. एंड देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू फाइंड वन ऑफ द सॉल्यूशंस यूजिंग दीज टिपिकल मेथड्स. एंड उससे एक सोल्यूशन मिलने के बाद रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड पे जाएंगे which will allow us to find the second solution. Okay, so this was the concept for e raised to x. Of course, you can keep changing the values of m and you will get the other answers. Now, we'll try to apply another category here. Okay, this is say category number 1. चलो अभी category number 2 apply करेंगे. And let's understand जो standard solution e raised to mx है उसमें e raised to mx sin x cos x सब cover हो गए because sin x cos x आपके तभी आएंगे जब m की वैल्यू इमेजिनरी होगी. ठीक है, तो दैट इज ऑल कवर्ड. सो यहाँ पे वी विल ट्राई टू टेक कैटेगरी 2 में वी विल ट्राई टू टेक लेट x रेज टू m इज अ सोल्यूशन. ओके, ऑफ आई बिलीव इक्वेशन 1 दिया है हमने इसका नंबर. या आई हैव रिटन दिस इन पर्पल हियर, इक्वेशन नंबर 1. सो लेट x रेज टू m is a solution of equation 1, and just for our benefit I'll write it down here again so that I don't have to keep scrolling again and again. Okay, so of course if it satisfies or it is a solution, it will satisfy it. So we'll find y dash. We'll start with y is x raised to m. Y dash would be mx raised to m minus 1, and y double dash would be m square x raised to m minus 2. Okay, so let's substitute in equation number 1. We would get y double dash means m square x raised to m minus 2 plus m x raised to m minus 1 into p of x plus x raised to m into q of x, and this entire thing will be equal to 0. This entire thing will be equal to 0. I think I've made a mistake in the double derivative. m square नहीं आएगा यहाँ पे, m minus 1 आएगा. करेक्ट ना? करेक्ट है? Okay, is this fine everyone? Yes, ma'am. Okay, now we will be looking at non-trivial solution. Homogeneous equation का हमेशा trivial solution होता है. तो for non-trivial solution, non-trivial मतलब 0 नहीं होगा. x raised to m minus 2 will not be equal to 0. So पूरे टर्म को x raised to m minus 2 से डिवाइड कर देंगे. So I will be left with m minus 1 in the first term. यहाँ पे जब m minus 2 से डिवाइड करोगे आप तो m x बच जाएगा, एंड यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा. ओके, फाइन. एंड लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 2 हमने ऑलरेडी लिया था वहां पे e raised to mx वाले क्वेश्चन में. ओके, सो यहाँ पे आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पे अगेन एज वी डिड बिफोर we will put different values of m. Okay, so let me start with
m is equal to 1. When I put m is equal to 1, is x raised to m है will become x. So y equal to x is a solution. If अब इक्वेशन 3 में डालेंगे m की जगह पे 1, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म x px हो जाएगा एंड थर्ड टर्म x स्क्वायर qx रहेगा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब होगा, एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देख रहे हैं मतलब x 0 नहीं है, तो x से डिवाइड कर लो, तो px प्लस x qx इज 0. तो जब px प्लस x qx 0 होगा, in that condition y is equal to x is a solution. In that condition y is equal to x is a solution. ठीक है, अभी इसी में m is equal to 2 भी डाल के देख लेते हैं, and then we'll look at the example. So let's put m is equal to 2 also over here. So in that case x raised to m मतलब x square हो जाएगा. So that is a solution if, now I'll put m is equal to 2 in equation number 3. So 2 into 1 plus 2x px plus x square qx is 0. And I can just simplify and write this as 2 plus 2x px plus x square qx is 0. So when the first one is satisfied, y is equal to x is a solution. This one is satisfied, y is equal to x square is a solution. ठीक है, and you can keep changing the value of m. आपको अलग अलग conditions मिल जाएंगे. अब यहाँ पे let's look at an example. One plus x square y double dash minus 2xy dash plus 2y equal to 0. Okay, so any ideas on how will we start with this question? I want to find one solution of this particular differential equation. Second solution पे बाद में जाएंगे, पहले तो one solution ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Any inputs on how do we start? Anyone? First divide by 1 plus x square. Very good. You have to divide by 1 plus x square because your standard form which is there in purple on your screen, y double dash का coefficient 1 है. y double dash का coefficient हमेशा आपका 1 होना चाहिए. ठीक है, तो you start by dividing by 1 plus x square. एंड यहाँ से अब p and q निकालोगे तो p of x is negative 2x by 1 plus x square and q of x अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 upon 1 plus x square आएगा. इज दिस करेक्ट? अब ये जो p of x और q of x है, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? m is equal to 1 वाली या m is equal to 2 वाली? M is equal to 1. करेक्ट. q को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव 2x आ जाएगा, राइट? और उसको फिर ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा. सो हियर आई कैन क्लेम दैट px plus xqx is 0. So इसका मतलब y equal to x is a solution of the given differential equation. अब मुझे वापस यहाँ पे चेक करना है. प्रीवियस वाले एग्जांपल में तो हमने वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, तो हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मेथड लगा के चेक कर लिया. यहाँ पे कैसे चेक करोगे? एनी इनपुट्स? यहाँ पे कैसे चेक करोगे कि भाई y is equal to x is a solution? How do you plan to check it? Put the value of y dash and y double dash in equation 1. Correct. So यहाँ पे y dash will be 1 and y double dash will be 0, no? Correct? So when I put it in, say this is equation star, I can call it. So equation star में डालोगे तो y double dash तो 0 है, तो first term तो 0 हो जाएगा. Second term होगा minus 2x, y dash 1 है and plus 2 times x. Is that equal to 0?
Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So yes, this is what happens here. I hope things are clear that this was a solution we have verified and we could find one of the solutions. I hope the method of finding one of the solutions is clear with everyone. Okay. Yes, ma'am. And if this method is clear, we will now move to the theory of reduction of order method. And आज के lecture में तो नहीं हो पाएगा. कल again I'll be taking a lecture at this time itself, 7 to 8. And in that lecture we will do sums on reduction of order method. Again remember ये जो हमने derivation किया है, this can be asked as a small proof part. आपके जो questions 10 marks के हैं, तो उसमें 5 mark का एक derivation, 5 mark का एक sum उसके साथ attached हो सकता है. I hope you are understanding this. ठीक है? So ये जो derivations हमने किए हैं, finding one of the solutions, ये भी एक derivation है, ये one of the proofs है आपके लिए. चलो, let's move to the actual reduction of order method. और यहाँ पे we will learn if I know one of these solutions, second solution कैसे ढूंढना है या फिर general solution कैसे ढूंढना है. Okay, that is what we are going to learn over here. Okay, so again we will start by considering the differential equation y double dash p of x y dash q of x into y equal to 0. I'll call this as equation number 1. Again, I want you to note that y double dash का coefficient जो है 1 है. ठीक है? So let y is equal to u be one of these solutions of equation number 1. अब ये जो equation 1 का one of the solutions है, आप अपर कोई भी method से ढूंढ सकते हो. ठीक है? So if y is equal to u is one of these solutions, our target is to find the other solution. So now we assume y is equal to u times phi is another solution. Okay, or is a general solution. So your target is going to be to find the value of this phi. And let's understand ये जो phi होगा वो function होगा. अगर वो number आ गया तो फिर linearly independent solution नहीं मिलेंगे. ठीक है? Because u and like k times u will not be linearly independent. Our target will be to find linearly independent solutions. तो ये जो phi है, it is going to be the function. So our target is going to be to find phi. This is what we're going to target. So let's start with y dash. Let's apply uv rule. U derivative of v, v derivative of u. Let's apply double derivative again. So u derivative of v, v derivative of u. ये first term का derivative हुआ. Second term का derivative phi u double dash, u dash into phi dash. थोड़ा सा simplify कर लेते हैं. U phi double dash 2 times phi dash u dash and phi u double dash. Okay. Now, since y is equal to u times phi is a solution of equation number 1. It satisfies equation number 1. So let's substitute these values there. So in place of y double dash, I'll put u phi double dash 2 times phi dash u dash phi u double dash. Okay, that's phi double dash. P of x multiplied by phi dash, that is going to be u phi dash phi u dash plus q of x into y, which is going to be u phi. And this entire thing should be equal to 0. This entire thing is going to be equal to 0. Now let's observe. I'm going to take some particular terms together and
I don't think I will need to give the reason for that. You will yourself uh, should be able to find it out. So I'm going to take 1, 2, and 3 terms together, and the remaining terms I'll keep it aside. So what is the speciality with these 3 terms? तीनों में से 5 common ले लेंगे. U double dash, U dash times P of x है यहाँ पे, because bracket के बाहर P of x है, and Q of x into U. Okay, these are the 3 highlighted terms. I'll write the remaining terms as it is. Is this correct? I have written all the like 1, 2, 3, 4, 5, 6 terms are there. 3 terms in the first bracket and the remaining 3 terms outside the bracket. What can you say about the 3 terms in the first bracket? Yes, students. Is equal to 0 because Very U good. is solution. Correct, correct. Now, Yes, since ma'am. U is a solution, correct, no? U is a solution. One of the solutions is known. So U is a solution of equation 1. I will claim that U double dash plus P times x into U dash plus QX into, okay, QX, not phi. This will be 0. So my first bracket is 0. So phi into 0 plus the remaining. Okay, this is what I'll get. And phi into 0 is going to be 0. So I will be left with now U times phi double dash plus, okay, someone wants to enter now. Almost at the time of end of lecture. Okay. Yeah. Now observe these two terms. They both have U phi dash common. So I'm going to write this phi dash common here. And I'll be left with 2U dash plus P of x multiplied by U. And this entire thing is still equal to 0. Okay, now we have an equation which is in phi dash and phi double dash. So let's assume phi dash is some variable, some function v, like v of x you can call it. So phi double dash will be v dash. And let's replace it. So you will have u v dash plus v times 2u dash plus p of x into u. This entire thing is going to be equal to 0. I'll divide throughout by u. So I'll have v dash plus u into 2u dash by u plus, okay, this is not u, this is v here. V times u, no, u will get cancelled. V times p of x. Okay, this is equal to 0. Or I'll write this as v dash v times, okay. Now observe this form. Can I claim this is a linear function or linear first order differential equation? Yes or no? Yes, students? Yes, ma'am. What is the standard form of linear first order differential equation? Y dash plus p of x times y equal to q of x, right? Where these two should be Yes. strictly functions of x. If we are working with like things like this. So now tell me we are working with v dash. So the u part and the px part should be strictly functions of u itself, not a function of
V. So the V is already out and there is no V part in this, right? Because U times 5 we had taken. So V dash is corresponding to 5. So 5 will not repeat inside the bracket. Are you understanding? So this strictly will be the function of U or it will be the function of X alone. Can I say that? Yes, ma'am. Okay. So this is a linear function, and linear function, how do you solve it? You first find the integrating factor, which would be e raised to integral px. And then we say the solution is y times integrating factor is integral of integrating factor into q of x. Okay. And a plus c, constant. So now let's apply the rule of linear here. My integrating factor in this case would be e raised to integral 2u dash divided by u plus p of x dx. Now, what will be the integration of the first part? Like these are two integrals, right? One is integral of u dash by u and second is px. Come on, what is the integral of first part? Anyone? What is the integration when the numerator is a derivative and the denominator is a function? Log Log. of log Correct, of denominator. correct. Log of the denominator, right? So this is going to be e raised to 2 log of u into e raised to integral p of x as it is. This becomes e raised to log of u squared into e raised to integral p of x dx as it is. And exponential and log will get cancelled. I'll be left with u squared e raised to integral px dx. Okay, this is the integrating factor. Now the solution will be given by v times the integrating factor, because this time the dependent variable is v. Integrating factor is this, equal to integral of integrating factor into 0. No, this right hand side is your q of x, which is 0. So this 0 part we can just ignore, as in integral of 0 is going to be 0 or constant, and you just have to write a plus c then. Okay, the constant part. So instead of writing plus c, I'll directly write c. I hope this is clear. We have not yet found the answer because your target is to find phi here, not v. So I can now say v is equal to c upon u square e raised to negative integral of p of x dx. And this v is nothing but phi dash. That's how we had started with v. So phi dash is c over u square. And if phi dash is this, my phi of x, which is the second solution, okay, would be c times, c is a constant, so I bring it out, integral of this integrating factor divided by u square dx. If this is phi, my general solution of equation number 1, equation 1, we had taken the general solution as u times phi, if you remember. So cu integral will remain as it is. You'll be able to calculate the integral only when you know what is px, only when you know what is u. So this is your formula to be used for reduction of order method. And this formula is valid when you know one of these solutions. Again, we saw the theory today, how to find one of these solutions also. I hope this is clear with all of you. Yes, ma'am. Okay. So the difference between variation of parameters method and the reduction of order method is
Variation of parameter methods, you require two solutions. In the reduction of order method, you will require only one solution. One solution is enough to find the second one. And generally, we use these when you have variable coefficients. Okay. So for today, I will stop here. Tomorrow, again, evening, same timing. We will start with sums on reduction of order method. Today, we did the theory of reduction of order method. I will share the video recording and the notes on the Eclipse platform. Okay. मैम Yes, please. मैम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर मिल सकते हैं क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपके इग्नू की वेबसाइट पे नहीं है क्या? मैम मैंने No, बोला ma'am, it is for 2016, 16, I want 17, 18 are there. acha, one person at a time can speak, please. One person, because if two people are talking together, I cannot hear. Yes, Stella, what you Ma'am, the previous year question paper which are available are for the year 2016, 17, 18. So, like, okay. if we get from 19, 20, it will be easier, ma'am. So 19, 20, 21. see what I suggest is one of you just visit the university, whoever is free, take the pictures, share it with everyone. Okay, ma'am. Okay. Yeah, it's a big group. You all are connected via Telegram and WhatsApp. So I believe one of you can just travel and do the needful, correct? Okay, ma'am. Yeah, These sure. things should be available. These things should be available in the library at IDOL, right? So we'll continue tomorrow with the sums part. Yeah. Thank you, class. थैंक यू मैम. Yeah.